अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गुलजार और आज हम इस क्लास में सीखेंगे डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए रेज्ड पावर एक्स विद द हेल्प ऑफ एबिन शो और विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ए रेज्ड पावर एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल और एबिन शो मेथड, यही हम सीखेंगे इस क्लास में आज। सो लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ एबिन शो मेथड, दैट इज we give small increment on both sides of the equation. Give small increment on both sides. What we get? We get y plus delta y is equal to a raised power x plus delta x. And let's name this equation as equation 2. Now, second step of Ebinshaw method is we subtract equation first from equation second. So we write y plus delta y minus y is equal to a raised power x plus delta x minus a raised power x. This negative y and positive y will cancel out. Now on LHS सिर्फ हमारे पास है डेल्टा y और राइट हैंड साइड पे है a रेज्ड पावर x प्लस डेल्टा x माइनस a रेज्ड पावर x। तो हम आगे बढ़ेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू a रेज्ड पावर x प्लस डेल्टा x माइनस a रेज्ड पावर x। थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, फिर हम स्टेप नंबर 3 पे पहुंचेंगे। दिस इज डेल्टा y। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज ए रेज्ड पावर x प्लस डेल्टा x। आई कैन राइट इट एज ए रेज्ड पावर x इंटू ए रेज्ड पावर डेल्टा x minus a raised power x, because when bases are same, powers are added. So a raised power x plus delta x can be written as a raised power x into a raised power delta x. Now let's move to the step number 3 of Ebinshaw method, that is divide both sides of the equation by delta x. What we get? Delta y by delta x is equal to a raised power x, a raised power delta x minus a raised power x divided by delta x. यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे a raised power x है इस टर्म में, फिर है यहाँ पे भी a raised power x. I can take common terms out. So what can I write? I'll write dy by dx इज इक्वल। देखिए, फिर से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी है ए रेज्ड पावर एक्स और यहाँ पे भी ए रेज्ड पावर एक्स। मैं लिखूंगा ए रेज्ड पावर एक्स और अंदर है ए रेज्ड पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 4 ऑफ Ebinshaw मेथड, दैट इज टेकिंग लिमिट as delta x tends to 0. I can write limit delta x tends to 0 delta y by delta x is equal to limit delta x tends to 0 a raised power x into a raised power delta x minus 1 divided by delta x. This is the expression. So सिंस ए रेज्ड पावर x जो है, इसमें कहीं पे भी डेल्टा x इन्वॉल्व नहीं है, सो आई कैन टेक ए रेज्ड पावर x आउट फ्रॉम द लिमिट। मैं लिख सकता हूँ dy बाई dx इज इक्वल टू ए रेज्ड पावर x, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x, वेयर डेल्टा x टेंड्स टू 0, आई कैन राइट इट एज dy बाई dx। तो ए रेज्ड पावर x, फिर उसके बाद लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ए रेज्ड पावर डेल्टा x माइनस 1
डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक स्टैंडर्ड लिमिट हम यूज़ करेंगे जो आपने लिमिट्स में पढ़ा है। अगर हमारे पास कभी भी कोई लिमिट हो इस फॉर्म में, लिमिट h टेंड्स टू 0, a raised power h minus 1 divided by h, that limit is always equal to log of a। तो हम यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, ये है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इंस्टेड ऑफ h वी हैव डेल्टा एक्स, a raised पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो हम लिख सकते हैं dy by dx is equal to a raised power x into log of a। ये है डेरिवेटिव a raised power x का। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है a raised power x where a is any constant, any real number and x is a variable, we can write derivative dy by dx is equal to a raised power x log of a। एक एग्जाम्पल करते हैं, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y is equal to 5 raised power x, I can write its derivative is 5 raised power x into log of 5। This is how we can differentiate some exponential functions which are in the form of a raised power x। Next lectures में हम कुछ और functions के derivative निकालेंगे with the help of Ab initio method and first principle। तो मिलते हैं next lectures में। Till then, goodbye।